जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह हसन अलवी से एयर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। जैसे कि आप जानते हैं, ला एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसका पाक स्टडीज़ से रिलेटेड हम अपनी जो है वो लेक्चर्स कर रहे हैं और आज उसका फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हमने आपका जो प्रोविंस सिंध है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करने हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि ऑल इज़ अबाउट यू पीपल, आप लोगों के लिए लैट गेट लॉ पार्ट 1 2 3 इंशाल्लाह सब कुछ इसमें कवर करेंगे और हर चीज़ करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बट टुवर्ड्स टुडेज वीडियो, जिसमें एमसीक्यू हमारे पास फर्स्ट पे है रिगार्डिंग द प्रोविंस ऑफ सिंध इज़ द एरिया ऑफ सिंध इज़, सिंध का एरिया कितना है? 1,40,914 square kilometer. How many divisions are there in Sindh? 7. Kirthar hills are located in Sindh. The Indus River falls into the Arabian Sea. Archaeologists have identified some 400 Indus civilization towns scattered from Kabul to Delhi. Mohenjo-daro is most famous town of the Indus civilization located on the west of Indus River. Sindhi language is based on Arabic. Lari language is spoken in Lower Sindh में ये बोली जाती है Lari. Where is the National Museum of Pakistan located? Karachi. Gadani is famous for shipbreaking. The largest cotton exchange building of Pakistan is situated in Karachi. Clifton Beach is located in Karachi. Haleji Lake, ये क्या है? Kadiro Lake and Kinjar Lake are located in Sindh. Shah Jahan Mosque is located in Thatha. Manchar Lake is situated in Jamshoro. University of Karachi is located in Karachi. The Dash motorway connects the cities of Hyderabad and Karachi in the Sindh province of Pakistan. M9 motorway. The Sindh Provincial Museum is located in Hyderabad. Who was King Umar, first king of the Sumar Dinars? The Marvi is a folk story of Sindh. How many bargas are there in Sindh? 3. The Thar desert is called Friendly Desert. The shrine of Lal Shahbaz Qalandar is situated in Sehwan Sharif. Lal Shahbaz Qalandar wrote several books in Persian and Arabic. The largest natural freshwater lake in the subcontinent is Manchar Lake. Mohenjo-daro means Mount of the Dead. Mohenjo-daro is a 4,000 years old city of the Indus civilization. Mohenjo-daro is located at the west bank of the Indus in the Upper Sindh. The hottest place in the Pakistan is Turbat. The shrine of Shah Abdul Latif Bhittai is located in Bit Shah. ये कोई उनका एरिया वहाँ पे सिंध में. Largest city of Pakistan is Karachi. Shah Abdul Latif is the author of Shah Jo Risalo. Risalo is the best known collection of romantic poetry in the language Sindhi. Which city of Sindh is popular for woodwork industry? Hala. Which city is on the border of Sindh and Punjab province? Kashmir. Malakhara is a traditional game of Sindh. The shrine of Abdullah Shah Ghazi is located in Karachi. First capital of Pakistan was Karachi. The largest coal reservoir are found in Thar. The shortest serving governor in Sindh history is Justice retired Saiduzzaman Siddiqui. What is the total length of Indus River? 3,180 kilometers.
Where is the Pakistan largest mosque masjid and the world third largest in Pakistan? तो वो कहाँ वाक़ है जी? कराची में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की थर्ड पे आती है नंबर में, वो मस्जिद कहाँ है जी? कराची में। द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज सिंध, सबसे ज़्यादा आबादी वहाँ पे। जरदाक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किरथार रेंज। सिंधु मोहिंजे शाह में फेमस बुक ऑफ सिंधी लिटरेचर रिटन बाय किसने लिखी जी? अमार जलील। सिंधी सिस्टियन राइटर एंड अ columnist Qazi Abdul Jalil, popularly known as Amar Jalil, was born in Rodi, Sindh. Sindh was conquered by Muhammad bin Qasim during the Umayyads period. Urdu translation of Shah Latif Jo Risalo was made by Sheikh Ayaz. When did British conquer Sindh? 1843. Dash led the military conquest of Sindh and conquered whole Sindh in 1843. Sir Charles James Napier. तो ये थे हमारे सिंध से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपको पेपर के हवाले से आ सकते हैं इन लैट। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मज़ीद शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी लैट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।